Hello, am I audible? Hello, am I audible? Hello, am I audible? All right, so let's start solving the questions. Okay, question 1. For the checkpoint number 1, for the first question you need to keep marking yourself. Okay, फिर तुमको बताना है कि 10 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं. Question 1, dimensional formula for universal constant of gravitation. Option A, B, C and D. I am just writing the power for MLT. Okay, -1, 3, -2, then 1, 2, -2. Option C is -1, 2, -1 and 1, 3, -1. जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है they can answer. Okay, no issue. All right, option A. Option A. Perfect. Option A. So option A will be the right answer. You can derive it from the F is equal to G m1 m2 by r square. So G का formula क्या होगा? Fr square upon m1 m2. So it is Newton meter square upon kg square. Solving this, you will get the option A as the correct answer. Clear? Any doubt? Okay, let's write the question number 2. If momentum is increased by 50%, then kinetic energy will increase by what percent? It will be 50% or will it be 100% or 125% or option D it is 150%. Very important question. अगर मान लो कि मोमेंटम 50% इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी?
Okay, option C. Everyone is saying C. Ronak is saying option C. Okay, let's solve. How we can solve the question? Momentum is increased by 50%. तो मान लो कि इनिशियल मोमेंटम जो है P1, ओके, इनिशियल मोमेंटम P1 है. इफ आई टेक इट एज 100, so P2 का वैल्यू I will consider as 150%. Okay. Now, relation between kinetic energy and momentum, K is equal to P square by 2m. It is K is equal to P square by 2m. So it is proportional to square. So if you write K2 by K1, तो यहाँ पे लिख देना P2 square by P1 square. So 150 into 150 by 100 into 100. So it will be 225 divided by 100. तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर है, ओके, the answer which you get is like K2 is equal to 2.25 times K2. इसको 1 plus 1.25 K2 ऐसा लिख दो. ये जो वैल्यू है उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, then you will get the percentage, which is very important method to solve. Okay? कोई भी प्रोपोर्शनलिटी बेस ऐसा क्वेश्चन तुम 10th में करते थे रिलेटेड टू रेडियस एंड एरिया. ओके, जहाँ पे रेडियस तुम 50%, 30%, 100% बढ़ा दो तो एरिया कितना चेंज होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, so using that simple technique you can solve this. Any doubt in this method? Just let me know then. Any doubt? Okay, let's switch to the next question. Question number 3. Percentage error in measurement of radius is 2%. Okay. Then percentage error in calculation of volume is A 2%, option B 4%, C 6%, and D 8%. Tell me about the percentage error. Percentage error in measuring the radius is 2%. Then what is the percentage error in calculating the volume for the sphere? Okay, for the sphere. I've forgotten to write the sphere. Okay, for sphere it is. Okay, Ronak is saying 4%. 4%. Kalp is saying 8%. Terry is saying C. And Nisarg is saying B. सारे ऑप्शन आ गए, सारे आंसर बता दिए. ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे ये. सॉल्व कर दूं? सॉल्व कर दूं? ओके, सी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 pi r cube. So whenever you are calculating the error,
सो एट टाइम तुम्हें कांस्टेंट तो कंसीडर ही नहीं करने हैं, जो पावर है उसको कोफिशिएंट बना दो। जिसका परसेंटेज एरर है वो दिया है 2, सो 3 2 ज़ा 6। जस्ट उसके पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट, एनीवन? Okay, I am giving you one more question. Let's suppose percentage error in A is 2%, percentage error in B is 4%, percentage error in C is let's say 3%. And if I give you formula like this, Q is equal to A power cube B square upon cube root of C. Likewise, I can give you. So, find percentage error in measuring Q. Okay. Let's say this is our question number 4. Try to solve this using the same concept. मैंने क्या बोला, पावर जो है वो आगे कोफिशिएंट में मल्टीप्लायर में लेके आना है। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा। एनीवन? Okay, Kalp is saying 48. 48. Terry is saying 9. Ronak is saying 15. Very good, Ronak. 15 is the right answer. 15 is the answer. How? Let's say परसेंटेज एरर इन क्यू पूछा है तो तुमको क्या करना है, 3A + 2B + 1/3 ऑफ C, बिकॉज यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है मैंने। तो तुम्हें क्या करना है, 3 × A दैट इज 2, फिर 4 एंड 1/3 ऑफ 3, तो ये होगा 6 + 8 + 1, तो आंसर विल बी 15%. दिस इज द परसेंटेज एरर एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट. एनी डाउट? एनी डाउट? इजी, बढ़िया. Such type of questions can also be there in G-Means exam. Question 5. Which pair has same dimensional formula? Which has same dimensional formula? Option A is force and power. Option B is torque and work. Option C is momentum and energy. Option D is stress and strain. इसमें सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगी. Okay, option B,
Everyone is saying option B, which is right answer. Torque and work. Okay, both have the SI unit of joule and have the same dimensional formula. Okay, next question 6. Significant figures in 0.007030. Option A is 6, option B is 4, C is 5 and D is 3. इसमें कितने significant figures है वो तुम्हें बताना है. How many significant figures are there in this? Option A, 4 significant figures. So these are the 4 significant figures. 7030. Okay, आगे के जो 0 होते हैं वो हम consider नहीं करते इसमें, right? So there are 4 significant figures. Question number 7. Car covers first half of distance with speed 40 km/h and rest at 60 km/h. Find the average speed. Option A is 48, option B is 50, C is 52 and D is 45. You need to find the average speed between two distances. Between these 2 points, distance same है. Okay, Nisarg is saying option A. There is also saying option A. Okay, Maulik is saying option A. Ronak is saying 50. All right. Any other answer? Any other response? Okay, so let's solve it. Now for the equal distance, when there is an equal distance or distance divided into equal parts, in that case, formula is 2v1 v2 upon v1 plus v2. So in that, when you put the values 2 into 40 into 60 divided by 100, v1 plus v2, 40 60 will be 100. And just cancel it out and write the answer as 48, option A. So option A will be the correct answer. Any doubt? Any doubt? ये सारे जो concept है वो तुम्हें अगर याद है, you can easily solve the question. You can easily solve the question. Very important formula. Okay, let's write the next one. Question number 8. A body dropped from top of a falls through 40 meter in last 2 seconds. The height of tower is blank. You can take G equal to 10. Option A is 45 meter, B is 80 meter, C is
50 meter, and option D is 60 meter. All right, try to solve this one. Okay, option A. $45. All right. Option A. Very good, Ronak. Very good, Daria. Very good, Maulik. Anyone else? In last 2 seconds, 40 meter distance has been traveled. Okay, so let's solve. S is equal to ut plus half at square. तो अगर इसको हटा दूं तो हाइट इज इक्वल टू 1/2 at सॉरी gt स्क्वायर, g का वैल्यू 10 है, so h will be 5t square. H will be 5t square. This is the concept. Now for h dash it will be, see it is last 2 seconds, so total time में से वही 2 सेकेंड अगर हटा दूं मैं, ओके, 5 इंटू टी माइनस 2 स्क्वायर वो यहाँ पे रख, उतने टाइम में वो नीचे आया है. ओके, सो बाय दैट यू कैन से h माइनस h डैश इज 40. तो लास्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है दैट इज, ओके, इट इज लाइक दिस. यू कैन सी द सिचुएशन, बॉडी इज ड्रॉप्ड और यहाँ पे तो इनिशियल हाइट जो टोटल हाइट है वो h है, फॉर एग्जांपल ये h डैश है, तो ये जो हाइट है वो क्या होगा, h माइनस h डैश, तो उसका वैल्यू क्या आएगा 40. तो h का वैल्यू हम रख दे 5t स्क्वायर माइनस 5 into t minus 2 square is equal to 40. Using this you can solve for the value of t, and that you can put over here to get the value of h. ठीक है, तो इस तरीके से तुम ये सवाल बना सकते हो पूरा. अभी ट्राई करके देखो, जिसका आंसर नहीं आया वो. आई एम गिविंग यू कपल ऑफ मिनट्स टू सॉल्व. क्लियर है सवाल? बी रिस्पॉन्सिव. We can only interact through this lovely chat box. All right. Yes, Maulik. Okay, here in question number 9, they have given us the graph. Position time graph is given. Angle for first is 30 degree and for second it is 45 degree. Okay. So you have to find the ratio of velocity VA by VB. 1 by root 3, 1 is to 1, then given root 3 is to 1 and 1 is to 2. Okay, these are your 4 options. 30 degree and 45 degree. I hope angles are visible.
Okay, Kalp is saying option A. Ronak is saying option C, 3:1. Okay. What others are saying? Okay, Maulik saying option A. You need to find the ratio of velocity. वो तुम्हें find करना है यहाँ पे. Terry is saying C, option C. Okay. चलिए सॉल्व करते हैं. अभी हमें पता है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. तो हमें क्या करना है, इनका पोजीशन सॉरी स्लोप फाइंड कर लेना है. इफ वी वांट टू फाइंड VA by VB, so it is 1030 upon 1045. This is the slope. So what is the value of 1030? It is 1 by root 3 upon 1. So answer will be option A. Okay, answer will be option A. Simple. Now, last question before the checkpoint 1. Then we will discuss your marks. Position function x is given as 3t square minus 6t plus 4. You need to find velocity when acceleration is 0. Okay, your options are 0 meter per second, B is minus 6 meter per second, C is 3 meter per second, and D is plus 6 meter per second. Okay, you know this technique to solve. Some are saying option A, some are saying option D. What is it? Six meter per second. All right. Question is the velocity when acceleration is 0. Okay, 6. Okay, let's check. मान लो कि इसका डेरिवेटिव निकाल ले, 3t square minus 6t plus 4. So velocity will be 6t minus 6. Okay. And acceleration will be 6 meter per second square. So this value is constant. Okay, this value is constant. Now if we want to find the velocity, see यहाँ पे ऐसा बोला है कि acceleration 0 कब होगा. Okay, so let's check कि velocity 0 कब होगी. V is equal to 0. Okay, so 6t minus 6 is equal to 0. So t will be 1 second. At 1 second it will be 0. Okay, but this question is not valid as far as I concerned it. This statement. Okay, यहाँ पे error है question में, क्योंकि उन्होंने ही बता दिया है कि acceleration 0 है, but हमें क्या मिल रहा है, acceleration constant मिल रहा है जो 6 का है, right? But velocity 0 कब है, that we can calculate at t equal to 1 second or such.
ऐसे क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है. So there is error in question. So let's switch to the next question. Okay, so we have completed the checkpoint number 1, first 10 questions. So now let's switch to the question number 11 for checkpoint number 2. A ball is thrown vertically upward. Ball is thrown यहाँ पे लिख देता हूं. A ball is thrown vertically upward with velocity of 20 meter per second from top of 25-meter tall building. Total time to reach the ground. Total time to reach the ground. You need to take g equal to 10 meter per second square. Option A is 3 seconds. Option B is 5 seconds. Option C is 4 seconds. And option D is 6 seconds. NCERT question है. Okay, Nisarg might be knowing the answer, replying very quickly. चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी 5 सेकंड. अच्छा, ऑप्शन बी 5 सेकंड. Any other? Anyone else? You need to solve. Situation is like this. यहाँ पे खड़े रह के ऊपर बॉल फेंका है. ओके, विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. तो पूरी ये ट्रेजेक्टरी कवर करके जब ग्राउंड पे आए तो इसका पूरा टोटल टाइम कितना है? Yes, calculating will help you to boost your confidence and you can solve it again. Okay, let's solve it. Now at this point, final velocity will turn down to be 0 at this point. So अगर इस पार्ट के लिए सॉल्व करें, v is equal to u plus 80. So v is 0 and value of u is 20 and value of g, that is negative because going upward, 10t. So t will be equal to 2 seconds for this part. Again coming back to this part, it will be 2 seconds again, and at this point it will again get the velocity of 20 meter per second. Height of the building is given 25 meter. Entire height of the tall building, it is given 25 meter. So from this point to this point, again you need to calculate the time. Okay, so that time will be equal to 1 second. So 2 plus 2 plus 1, you will get 5. When you solve it, you will get it. Okay, यहाँ से यहाँ तक s is equal to ut plus half 80 square से तुम पूरा क्वेश्चन बना सकते हो. Any doubt in this? We can solve. Last part, even if you are having doubt, we can solve it.
Okay, otherwise switching to the next question. Yes, option B. All right. Question 12. Area under the velocity time graph. Not velocity, it is given acceleration time graph. Acceleration time graph blank. It gives final velocity. Okay. Option B is given change in velocity. Option C is given total displacement. And option D is given average speed. What it will give? Option A, B, C or D? Area under the acceleration time graph gives final velocity, change in velocity, total displacement or average speed. क्या मिलेगा इससे? Okay, option C, option B, velocity change, option A, welcome Mahit, option B by Kalp. All right. So option B will be the right answer. It is change in velocity. Acceleration का definition ही वही है, rate of change of velocity. It won't give the final velocity. It gives the change in velocity. Change मिलेगा उससे हमें. All right. तो ये ध्यान रखना है बस. I also given you the trick. Okay. वापस याद करवा देता हूँ वो ट्रिक. अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तुम्हारे पास तो उसका तुम स्लोप फाइंड करो, देन यू विल कम टू वेलोसिटी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मान लो अगर तुम्हारे पास, उसका स्लोप करो तो तुम्हें मिल जाएगा एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तुम्हारे पास, उसका तुम एरिया फाइंड करो तो तुम्हें मिलेगा वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर तुम एरिया निकाल लो तो तुम्हें मिल जाएगा पोजीशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, टू सॉल्व द ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच आई ऑलवेज से वेरी हेल्पफुल. नोट्स में भी लिखते हैं हम ये. ऑलराइट. इन द सेम वे, ओके, इन द सेम वे मान लो तुम्हें पोजीशन का फंक्शन दिया है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगा. इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा. एक्सेलरेशन से इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगा. और इससे अगर इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी फंक्शन को तो वापस पोजीशन मिलेगा. ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली इंटीग्रेशन इज एरिया, नथिंग एल्स. इट इज एरिया अंडर द ग्राफ. और स्लोप यानी डिफरेंशिएशन. जहां पे कर्वेचर आता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, 10 तक तुम क्या पढ़ते हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ लेते हो. ओके, फिर जब ऐसे कर्वेचर आते हैं तो इस तरीके के ग्राफ को डील करना है तो तुम्हें कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आना चाहिए. ओके, दैट इज व्हाट इट इज. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी एंड क्लियर. ओके, ये सीख लो, ये चैप्टर हो जाएगा. ये चैप्टर से मेजॉरिटी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये वाली चीज याद रखनी है बस.
Question 13, I guess. Okay, I forgot the number. So let it be question 13. Two trains, 100 meter and 80 meter long, are moving in opposite direction with velocities 42 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरा है वो 30 किलोमीटर पर आवर. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ईच अदर. टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ईच अदर, कितना टाइम लगेगा दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में? ऑप्शन ए इज 9 सेकेंड, ऑप्शन बी इज 12 सेकेंड, ऑप्शन सी इज 15 सेकेंड and option D is 18 second. Okay, I'm giving you one hint. जब भी कोई चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड कर दो, और जब भी कोई चीज सेम डायरेक्शन में मूव करे तो उसकी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दो. हमेशा ये चीज याद रखो, सेम डायरेक्शन में तुमको सब्ट्रैक्ट करना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है, क्योंकि कोई चीज आप पास पास आती है तो देखो ऐसे होता है, दे आर क्विकली कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर. ओके, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है so they are slowly approaching each other, so it is like this only. So that is why same direction में subtraction होता है relative का, and opposite direction है then you can directly add it. Okay, तो ये सोच के कॉन्सेप्ट से ये सवाल बनाओ. Hi, who's there? Okay, Maulik is saying option B. Right, 12, that's 12 second. Okay, anyone else? तुम्हारे पास दोनों की वेलोसिटी है और तुम्हारे पास टोटल लेंथ है ट्रेन की. Okay, Ronak is saying option D, 18 second. All right, निसर्ग is saying option C. चलो मैं ही करवा देता हूं क्वेश्चन. मान लो कि ये ट्रेन A है और ये ट्रेन B है. ओके, इसकी लेंथ दी 100 मीटर और इसकी लेंथ है 80 मीटर. तो अगर दोनों को क्रॉस करना है एक दूसरे को तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 180 मीटर. तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस. एज यहाँ पे लिखा है ऑपोजिट साइड है, तो टोटल वेलोसिटी क्या करना है? सीधा ऐड कर दो. तो दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, बट हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18, तो ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड. तो अभी तुम्हारे पास स्पीड है, अभी तुम्हारे पास डिस्टेंस है, टाइम कैलकुलेट तुम करके दिखाओ. ओके, यू गिव मी द टाइम. आपके पास स्पीड है, आपके पास डिस्टेंस है, so which option is correct? Now you all must get the right answer. Perfect, option A. Very good, Ronak. Nice, Kalp. Very good, Mahit. Very good, Nisarg. Very good, Kanjan. Option A will be the right answer. It is 180/20. So this is a concept of relative velocity, how we can find it. चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. The ratio of distances traveled, question 14. The ratio of
distance is traveled by freely falling body in first, second, third and fourth second is blank. ठीक है. Option A is 1:2:3:4. Option B 1:4:9:16. Option C is 1:3:5:7. And option D is 1:1:1:1. Ratio of distance traveled by freely falling body in first, second, third and fourth second, उसका रेशियो क्या आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बार स्कूल एग्जाम्स में आता है, काफी बार. Okay, Maulik is saying option B 1:4:9:16. Okay, then Harmish is saying option B. Okay, 1:4:9:16. Welcome Gopal. Gopal is saying option B. Okay, मैं करवा दूं ये क्वेश्चन. Honest reply. This seems more good. Distance travel in nth second. Distance travel in nth second. Okay, उसका फॉर्मूला क्या है? Distance travel in nth second. U plus a by 2 to n minus 1. तो फ्री फॉल है तो ये U तो हट जाएगा इसमें से. ओके, वेरी गुड माहित. तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू 2n minus 1. ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 रखो और चेक करो कौन सा आंसर आ रहा है. यू कैन क्लियरली सी इट इज ऑन ऑड मल्टीपल्स. ओके, ऑड नंबर्स. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, इट इज ऑड नंबर. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, उसका सवाल था. चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. क्वेश्चन 15. ओके, नेक्स्ट सवाल करने से पहले ये चैट बॉक्स पूरा ठंडा पड़ा है थोड़ा. ओके, हेलो, थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, स्माइल कर दो, रिएक्शंस दे दो जो भी है. ओके, you all are seem to be upset in chat box. I feel आंसर नहीं आ रहा इसलिए. No worries. Yes, that's good. फिर नेक्स्ट सवाल लगाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है? 15 16 आई डोंट नो. 15. हेलो, कल पे स्माइलिंग. ऐसा है, हंसते रहो, इसलिए तो इमोटिकॉन्स दिए हमको यूज कर सके. 2i cap plus 3j cap minus k cap and vector b is given minus 4i cap minus 6j cap and plus lambda k cap. They are collinear. ये दोनों जो वेक्टर है वो कॉलिनियर है, दोनों वेक्टर. ओके, so your task is to find the value of lambda. ये कब कॉलिनियर होंगे वो तुम्हें बताना है. Options are -2, 2, 3 and -3. These are your options. These are your options. -2, 2, 3 and -3. Okay, option A, option B, collinear vectors. Okay, option A again. Harmish, Ronak and Mahit, all three are saying option A. Any other?
All three are saying option A. Okay, Khanjan is saying option B. Okay, Vipin Kumar is saying option C. That is 3. All right. Kalp, Nisarg. Maulik is saying option A. See, for collinear vector, it should be like this. A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Okay. This is the rule. Now see, this is A1, B1, C1, A2, B2, C2. Now you can apply the logic and tell me the correct answer. This is the condition for vectors to be collinear. ये condition लगा के आंसर बता दो फटाक से. You quickly get the answer. मैं लगा दूं. Okay, Ronak and Mahit got the answer. Option B. Sorry, Mahit got the answer option B. Kalp, you are still getting A. 3 upon minus 6, it is minus 1 by lambda. Now you just need to solve and you will get the value of lambda to be 2. Okay, negative sign का भी ध्यान रखना है. Alright. So option B will be the correct answer. Option B. Option B is the right answer. Let's solve the next question, 16. Two vectors of equal magnitude P, two vectors of equal magnitude, that is capital P, have resultant equal to P. दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी P है एंड रिजल्टेंट जो उसका मिल रहा है वो भी P है. ओके, एंगल बिटवीन टू vectors is blank. So option A 60, option B 90, option C 120 and option D is 180. It is very important question, very important. लिख सकते हो नोट्स में भी ये. Very important. Okay, Mike is saying option C. Very good. Ronak is saying 90. Maulik is saying C. Vipin Kumar is saying option B, that is 90. 120 degree. All right. Kalp is saying option B, that is 90. You need to solve and check. सही आंसर क्या होता है. चलिए कर दो सॉल्व. See, r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. यहाँ पे सबके वैल्यू p दे रखे हैं. p square is equal to p square plus 2p square cos theta. सब p दे रखा है यहाँ पे, राइट. तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं दोनों p स्क्वायर को, तो क्या बचेगा. cos theta will be equal to माइनस p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर. तो ये हटा दो. cos थीटा का वैल्यू होगा -1/2. तो यहाँ पे तो 0 होता है, यहाँ पे -1 होता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 120 डिग्री. सिंपल था. समझ में आया. यही फॉर्मूला है जो रिजल्टेंट वाला है. ओके, उसी फॉर्मूले से तुम कर सकते हो इसको. So option C will be the correct answer. Very good, Mahit.
नहीं, इमोजीज ढूंढ के लाते हो, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट सवाल करें, क्वेश्चन नंबर 17। ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा दिया 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड एंड u का वैल्यू दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें कैलकुलेट करना है। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट यू नीड टू कैलकुलेट, दैट इज 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, c 6 सेकेंड एंड d 8 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बता दो, मैं बता देता हूँ। ओके, इट इज इजी, अगर फॉर्मूला याद है फट से हो जाएगा। वेरी गुड माय चीयर्स, सुपर्ब। Anyone else? Time of flight, it is 2u sin theta by g। अभी लगा दो फॉर्मूला, 2u sin theta by g। ओके, फॉर्मूला लगा दो, 2 into 40। Okay, angle given is 30 degree, not 60. Angle given is 30. Angle is 30. Okay, so here sin 30 divided by 10. So it is to 1 by 2, 4 second. Okay, option B is the right answer, 4 second. Angle you need to take 30 degree. Okay, because it is there in question. Okay, what is the time? It is 10:50. Need to solve more or done for the day, as you say? Still not many questions are there. Need to solve more? Quickly reply. मौलिक का रोज एक ही रिप्लाई आता है, as you wish. Quickly you tell me, need to solve more और इतना ही आज के लिए, गेम ओवर। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। What about the others? Be quick, you can type or you can type. चलो एक आध आसान वाला क्वेश्चन दे देता हूँ, आसान सा सवाल दे देता हूँ। क्वेश्चन 18, let's say radius of circle is 5 meter and constant speed is given as 10 meter per second. Find centripetal acceleration. Option A is 10 meter per second square, B is 20, C is 50 and D is 2. आसान वाला दे दिया, चलो वेरी इजी, फटाक से हो जाएगा। वेरी गुड माइंड, वेरी गुड रौनक, सिंपल। Centripetal acceleration. Very good Maulik. Yes Nisarg. Very good Kanjan. Option B 20 meter per second square. Okay.
लास्ट में आसान सवाल इसीलिए दिया क्योंकि हैप्पी एंडिंग करना था, ठीक है। सबका आंसर सही आ जाए, सबका आंसर सही आ गया, देखो दिस इज द मास्टर की। Okay, so see you in the next session, probably in the next week now. Okay, so you can also invite your friends to join the party and solve the questions over here. बहुत सारे questions हम करते हैं जिससे concepts recall भी हो, revision भी हो, और तुम्हारे formulas तुम्हें वापस याद आ जाए कि कब कौन से type के question में formulas तुम्हें लगाने हैं, right? So you can also invite your friends, as I said, ताकि यहाँ पे जो competition है वो बनी रहे, more and more people can participate and give their answers and opinion. So I hope today's session was absolutely productive. So good night and see you in the next session.